Think we are live. Good morning, good afternoon, good evening, whichever part of the world you are in. I hope you are thriving and not just surviving. Welcome to yet another episode of the Bibliophile Circle, which is our virtual book club. And we have guests and book lovers joining from different parts of the world. First episode, we have a guest joining in from Sydney, then we had Karachi, and today I have somebody very special and somebody who can be extremely blunt and dangerous also at times. I hope and I wish that everybody who's online right now knows Farhad very well. Me and Farhad, we both are with Funworks, and I would not go into a lot of details on who Farhad is and who I am. If you don't know, please connect with us on Facebook or on LinkedIn, and let's go into more details and depth of who we are. Thank you all who've joined us. Please do leave your name and which city you have joined us from in the comments, so we can find out who all is with us. Getting quickly to the book. The book that we are discussing today is called Essentialism. एंड फरहाद को इस एपिसोड में बुलाने का एक मकसद ये भी था कि ही प्रैक्टिसेस द बुक टू द कोर, इस हद तक कि कभी कभी दूसरे लोग जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. कैसे क्यों वो आपको जो है वो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि कभी कभार जो एसेंशियलिस्ट है वो बहुत सारी चीजों पर ना बोल देते हैं, वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि क्यों आना है, क्यों होना है, क्यों मौजूद रहना है. एंड फरहाद प्रैक्टिसेस द बुक टू वो डेप्थ में जाके जो है वो उसको प्रैक्टिस करता है. व्हाट इज द बुक ऑल अबाउट? आई थिंक व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट क्विकली रीड द फर्स्ट पैराग्राफ which sets the whole tone for the book. And the paragraph goes something like this. Sam is capable executive in Silicon Valley who found himself stretched too thin after his company was acquired by a larger bureaucratic business. He was in earnest about being a good citizen in his new role, so he said yes to many requests without really thinking about it. But as a result, he would spend the whole day rushing from one meeting and conference call to another, trying to please everyone and get it all done. His stress went up as the quality of his work went down. It was like he was majoring in minor activities, and as a result, his work became unsatisfying for him and frustrating for the people he was trying to please. And I think this is a reality for a lot of us. हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे हाँ बोल देते हैं. We get stretched too thin. Interestingly, एक जमाना था जब आप लोगों को पूछे कि आप कैसे हैं तो कहेंगे I'm great, I'm good. अब जब आप लोगों को पूछते हैं कि आप कैसे, तो वो कहते हैं I'm busy. और सामने जवाब आता है busy is good. The question is कि क्या वाकई busy is good? And this is what essentialism is all about. There are two sentences in the book which I just love, which I believe is all about the book. One is, if you don't prioritize your life, somebody else is. And the second one is a life of design or a life of default. So let's quickly jump into it. Farhad, thank you very much for agreeing to be a part of this episode. Tell us, what is essentialism all about according to you, and how do you practice it? Very nice. I think I thank you for the opportunity, and now I can understand why you selected me for this book. But dil se aayi, that people who are essentialists can actually be very difficult for the others. You can now to छूटते ही बोल देंगे no, वो बंदा परेशान से ये क्या बकवास की है इसने. And what we will busy is good. देखो एक और ने नीचे ने कह दिया, someone is another colleague of busy is good definitely. What's very interesting is two things that came to my mind. Yeah. Yeah, I'll come to busyness as well. But something you said very interesting, and I think sometimes the books that we read, to a large extent, resonates also with someone that we are, and we connect with that. Way back in 1997, I heard this phrase. They said, "Most people major in minors." Yeah. So most people major in minors, and if you notice that's interestingly so many years down the line, again you hear more or less similar concept coming in the book Essentialism, and then you also have "Don't sweat the small stuff." So the question is, what is the small stuff? What is not the small stuff? What I'll do is this, because as you know, when I go through my reading, what I do, I like to create a framework around it. For me, Right. it is not about buying books and stacking them up. I like to read them. I like to question. I like to deep dive into them. I don't go into the book with the intention of challenging the book, with the intention of being judgmental.
but actually trying to extract things that could make more sense to me in the larger scheme of things. तो मैं करूँगा ये कि आज भी अगर आपकी इजाजत हो तो because what कल भी when you said we'll have a talk and I said who's going to talk. So what I'll do is I will very quickly, I'll also share the framework. So I think the methodology I would like to follow is I like to create the framework in terms of how I take this book. And then I will go into things that we all can use. I have used and I find a lot of value in the book, definitely. So yeah, I think Farhad, that's I was not able to share it in the beginning, but Bibliophile Circle को start करने का असल मकसद ही यही है. It's not a book summary, it's not a book review, it's not even a book critique. It's how I have experienced the book and how I apply it to my life and how this book brings a difference in my life. So essentialism is an interesting concept. Can get frustrating at times, and we have a few friends of ours joining us. I'll quickly say hi, Farhad, before we jump into what essentialism is all about. We have Nadia and Akbar Huda joining us from Karachi. We have Roshanara Fatehri joining us from Colombo, Sri Lanka. I believe that's a special guest, Farhad. Mom, yeah. We have Saman Mazhar joining us from Karachi. We have Plug joining us and says hello. We have Shaina Jagriani. I think Shaina deserves most active participate for Funbook webisodes. Farhad, we should send a certificate to her. She's definitely on all our programs. Yeah, and we have Atiya Ansari, we have Nadia Farhad, we have Nausheen, Zain, and Zulfikar Midani. Everybody saying hi. Hello. The book we are discussing today is Essentialism, and we'll quickly jump into it. And having Farhad on the episode is interesting because Farhad बैठकर बात नहीं कर सकता. So Farhad, I see a flip chart and a board behind you. So let's jump into the book right away. बिल्कुल सही, जबरदस्त. अच्छा, जो होता है ये कि जैसे अभी आपने कहा ना essentialism, for those of you who haven't read it, I think there is no substitute to the book Essentialism. You have to read it. अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी interesting चीज हुई. Noman, have you read the book? And those of you who are listening, have you read the book The Subtle Art of Not Giving an F? The Subtle Art of Not Giving an F. Interestingly, this is the book that I'm just finishing. Brilliant. अच्छा, मैंने इसका पार्ट दूसरी वाली भी हम अलग से ऑफलाइन भी बात करेंगे. अच्छा, हुआ ये मेरे साथ when I was reading when I got Essentialism around the same time I also got The Subtle Art of Not Giving wali. So, and I was reading both the books, and what I found most amazing is how more or less the same message can be communicated in so many different words. One with so much peace and love and so much of concern, versus another one which is so simple and very straightforward with one word explaining everything. इसमें गुस्सा ही नहीं घुसता. ना कहना तो भी एक वर्ड में दफा हो जाओ, करना भी एक वर्ड में कर लो. Versus the entire philosophy and the thought process. And I think it actually helped me get a much deeper understanding of essentialism as a result of reading that other book. मैंने क्या ये सबके लिए अलग अलग होगा. कुछ लोगों को वो ज्यादा अच्छी लगी, कुछ लोग कहेंगे ये क्या किताब है इतना लंबा चौड़ा. अच्छा, जो मेरी एक आदत रही है, and you know this, in fact from the time of Good to Great, जब मैं किताब पढ़ता हूँ I like to create a structure around it. तो मेरी समझ में आ जाता है कि है क्या. For those of you who are reading, and what I want to do is I want to take you through the structure very quickly. ये आपको इंटरनेट से भी शायद मिल जाएगा. Not exactly the same way, लेकिन I want to go into deep diving और उसके अलग-अलग elements में फायदा क्या-क्या हुआ. तो for example, इसके में जब आप online जाके देखेंगे, you will find it speaks of the 3 E's. Now there is a lot of concept of prioritization and things. So because we're not doing a book summary, I'm going to share कि मैंने इसको किताब को तोड़ा कैसे, how have I broken the book down. So this book speaks of the 3 E's. You remember what they are, वैसे Noman? Explore, eliminate, and execute. अच्छा, मैंने जो है ना इसको भी थोड़ा तोड़ दिया for my further understanding, and I think for ease, and I've tried it out in my sessions as well. I think it gives me a much easier structure. So what I've done is I've divided into essence. कि पहले तो ढूंढो essence है क्या of anything that you want to do. So and how you do that I've picked up straight from the book, and then I've used my own tools. Then you go into explore. So once I know the essence, I then explore. Once I've explored of what it is and how it is, then I go into elimination. And as a result of which, finally I execute. So yes. मैंने इस किताब को इस हिस्सों के अंदर तोड़ दिया कि सबसे पहली चीज that we need to do is we first need to find out what is the essence of everything. And in order to do that, the book speaks of something very interesting. The book speaks of 3 words over there, and which I'll discuss it then I choose. Yep. Discern. Yep. And the trade-offs. And trade-offs. Brilliant. अच्छा, इसको मैं आगे अब जो है ना फिर यहाँ पे मैंने अपनी अक्ल और अपनी पुरानी चीजें इस्तेमाल की है ना कि to connect with the thing that I have, and I think इसमें बड़ी value है when you're looking at choose, discern and trade-off.
the most essential thing in essentialism is to identify कि exactly essential है क्या. Right. That is the bigger Right. question. What is of the essence? And that is why I think essence is such a powerful word. Essence is your purpose, something that gets you excited. And you need to choose exactly what it is. दुनिया भर की चीजें आप नहीं कर सकते. I'm working on a program right now. It's called the Performance Accelerator Web Shop. जिसके अंदर what we're doing is कि we want a lot of things in life. And there's no harm in wanting अच्छी चीजें. So there are must-have, they're nice to have, and rather than like to have. So while there are a lot of things which are nice to have and like to, we just need to be able to draw parallels and understand कि जरूरी क्या है. So I think जब भी ये किताब पढ़ते हैं एक चीज जरूरी है समझना. What I've done for myself is actually choosing कि मेरे लिए जरूरी क्या है. इसी किताब के एक exercise है which I find जो मैं use भी करता हूँ and I find lot of value and मैं recommend भी करता हूँ. Recently I did a session for a company. आप जब लोगों से कहना priorities बनाए, and I invite all of you listening to us to try this out. I think out of this half an hour that we have, अगर यही एक message मिल जाए, it is beautiful. लोमान जैसे हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो मैंने क्या किया, मैं एक तरह लॉन्ड्री लिस्ट बना लो कि इस हफ्ते की लॉन्ड्री लिस्ट मेरी क्या है काम करने की. छोटी छोटी चीजें भी डाल दो, पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑफिस का काम है. पर्सनल शुक्र है वैसे कि ये जितना ये क्वारंटाइन और लॉकडाउन वाला हुआ है ना, वैसे भी लोगों की टाइमिंग वैसे आगे पीछे हो गई है. ठीक है ना, समझ ही नहीं आता सुबह को क्या करना है, शाम में क्या करना है, आज संडे है, आज फ्राइडे है, आज सैटरडे, आज ईद डे है, आज ईद का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, लोगों की वैसे समझ में नहीं आ रही वैसे. Right, and interestingly, हमारी जो पिछली episode थी, episode 2 was indistractable. Something on similar lines, कि distraction versus tractions, and उसके अंदर writer जो है बड़ी जबरदस्त बात करता है, कहता है you don't have different lives, you just play different roles in the single life. Yes. And that was amazing, and I think this is exactly what essentialism is. कि भाई आपके rules क्या हैं, आप work life or professional life, personal life is not separate. So I thought I'll just button in again. I'll go. बिल्कुल relevant था. अच्छा, मुझे एक idea मिल गया, मुझे धक्का मिल गया, मैं और जरा 3-4 steps आगे निकल जाऊंगा. So that is how you choose. तो अपना purpose बैठ के सोचो कि वाकई मेरे लिए क्या जरूर. उसका तरीका ये, make a laundry list of things that you have to do this week. So we need to understand हम कितने conveniently बोलते हैं कि जी मेरी priority है. प्रायोरिटी का देखा जाए मतलब क्या है. प्रायोरिटी का मतलब है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रायोरिटी. लोग क्या करते हैं, लोग 15 चीजें उठा लेते हैं, बोलते हैं ये मेरी प्रायोरिटीज है. यार प्रायोरिटीज 15 चीजें एक साथ हो नहीं सकती. तो आप तरजीह किसको दोगे, उसको रेटिंग तो कर लो ना. रेटिंग के तरीके अलग अलग हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग किताबों से मिलेगा आपको. लेकिन कम से कम प्रायोरिटाइज. जस्ट बिकॉज यू हैव 15 थिंग्स टू डू, योर थिंग्स टू डू इज नॉट योर प्रायोरिटी. And that is where the concept choosing and discern comes in. Right. And I think Farhad, the interesting thing in the book also is that what I think is a thing to do may not necessarily be a thing to do. Bilkul. This may become a tongue twister, by the way, but I think later on we'll talk about there are certain things that you have to say no, because not everything can be essential. And this is where you make space, which I'm sure we'll talk a little bit later. And this is what discerning actually means. You don't have to do everything. इस किताब में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, which I picked up. एक तो अपने जितने भी काम है पहले देख लो कि ये काम है, लेकिन हर काम प्रायोरिटी नहीं है. So you choose what your goals are. You discern इसमें से कौन कौन सी चीजें मुझे काटनी है. Right. तो अगर कटनी है तो ठीक है. अगर 15 की लिस्ट अगर मेरी बनती है, एंड अगर कोई चीज नंबर 13 पे अगर आती है, तो मुझे खुद ही समझने की जरूरत है कि वो कितना जरूरी है. अच्छा, कहीं कहीं ये भी हो जाता है. देन वी कम टू द ट्रेड ऑफ्स, व्हिच इज अगेन अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. ट्रेड ऑफ के अंदर होता क्या, ये हर कोई, आप, मैं, हर कोई करता है. हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग यहाँ से आती है. वी थिंक व्हाट इज गुड फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट रियलाइजिंग कि लॉन्ग टर्म उसकी वैल्यू क्या निकल सकती है. आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल आजकल, आई एम वेरी हाई बाय द वे ऑन ऑल द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन एट फनवर्क्स. सो आई एम वेरी हाई ऑन दैट. चाहे हमारे बिजवर्ड्स हो जाए, चाहे टीन टॉक्स है, बिब्लियोफाइल जैसे है, दीस आर ऑल सच ग्रेट इनिशिएटिव्स. What we've done is, where we could have perhaps done the other things in the laundry list that we had way back, we created that laundry list in March. I think we were able to choose and discern and make the right trade-offs. शायद उस वक्त हमने कोई चीज पे इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन जिन चीजों पे हमने किया, we were looking at long-term impact of things. Right. And I long-term think and this reminds me of that sentence again. You're either living a life of design or you're living a life of default. अगर आप ट्रेड ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो यू आर ईदर लिविंग समबडी एल्सेस प्रायोरिटीज और यू आर लिविंग योर ओन प्रायोरिटीज. दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन. सो और आई थिंक एक चीज और, फरहाद, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, जिस तरह से आपने चूज पे बताया, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज राइटर कहता है, व्हिच वी इवन यूज इन आवर वर्कशॉप्स. You need to be CEO of your life.
एंड ये हमने सुना हुआ है, बट यहाँ पे वो कहता है चीफ एडिटर ऑफिसर, चीफ एडिट ऑफिसर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट, कि यू हैव टू एडिट थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ. सो मुझे या किताब में अच्छी चीज ये लगती है, इफ यू लुकिंग एट जो मैं 4 जो मैंने बनाए, एसेंस, एक्सप्लोर, एलिमिनेशन में तीनों में कहीं पे कुछ काम नहीं हुआ है वैसे. इफ यू नोटिस देयर इज नो एक्शन एज सच, यू नो, आगे बढ़ने राइट. वाला है, खाली काटा पीटी के ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पूरी किताब बताती है नहीं करना. तो जो खुल के जो बाहर निकलता है वो आपके पास वो वक्त है जो आपको जो चाहे कर ले. राइट. And I think so that is where the trade-off is. Sometimes what we'll have to do is, and we need to be wary of the fact. अच्छा होता है, आपने हम सबने 80-20 रूल सुना हुआ है. So for example, वो कहते हैं 80% of the value come from the 20% of the work that we do. Right. While there are 80% of those things that give only 20% of value. Yeah. तो कभी का जरूरी नहीं कि आपकी पूरी लॉन्ड्री लिस्ट खत्म हो सकता है कि मैंने 12 की लिस्ट अगर बनाई है प्रायोरिटाइज करके, हो सकता है कि कई दफा लोग गलती क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें करके सेलिब्रेट करते हैं. वो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे चीजें छोटी छोटी ना, ये ईमेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैसेज भेज दूंगा, ओहो 12 की लिस्ट थी, आज मैंने 10 चीजें खत्म की. लेकिन गेस व्हाट, you forgot the two really important things that would have Right. had a long term impact. Yeah. Now that is what a trade off, that's what I learned from trade off, कि ये बड़ी Yeah. बड़ी लिस्ट को खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अक्सर वो छोटी छोटी चीजें वो जो बड़ी आसानी से खत्म हो जाती है. एंड क्या करता हूँ, छोटी चीज करके जबरदस्त, पता है आज मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. वैल्यू zilch. Yeah, Because but the are you value being an essentialist or are you being a non-essentialist is a question जो I think वो book में constantly compare करता रहता है, the way of essentialist and the way of non-essentialist. So 12 चीजें तो कर ली, but essential जो चीजें थी वो नहीं कर पाए. और So वो yeah, essential, और वो आप essential बनाते हो, वो आप essential बनाते हो from actually the choose, trade and discern and trade off वाले process से. Right. इसलिए ये E मेरे को इतना जरूरी था, I separated it. The second E is about explore. तो ये ना यहाँ से जब पता चल गया जब कि exactly मेरे लिए जरूरी क्या है, तो as I said priority list बनाए. List is not a priority. I think that's the magic word from the book that I got. Explore के अंदर बड़ी interesting चीजें लिखी हुई थी. ये interesting इसमें एक था escape, तो एक तो दूर भाग जाओ. Look, you know, Farhad, the subtitle of Escape is and I've marked it over here, the perks of being unavailable. बिल्कुल. You know, this is interesting. आजकल की जबान में जो है वो आजकल की दुनिया में being available, you know, is considered something very good, and on the contrary, the writer says the perks of being unavailable, where you are not available for everything and everybody, which is culturally very dangerous also in our context. Farhad, how do we handle that? और आपको आइडिया भी हो गया होगा, कुछ 3 दिन से हमने मीटिंग का टाई अप किया हुआ है कि हमें मिलना है, हमें बात करनी है. इस दरमियान मैंने फिल्में भी देखी हैं, वैसे मैंने आंखें भी देखी, मैंने ईना मीना टीका भी देखी, मैंने बोल रहा था बोल भी देखी, सारी पुरानी फिल्में बैठ के देखी, बट वी हैवंट रियली स्पोकन. एस्केपिंग है, देखिए ये अपने टाइम के लिए truly enjoying the perks of being unavailable. सॉरी यार अच्छा ये भी बड़ी एक और इंटरेस्टिंग किताब है, इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ सेडक्शन. That's another interview. We can sometimes speak of that as well. I found a lot of value in that book also. Escape, देखिए आपको हर चीज की अवेलेबल हर वक्त होना जरूरी, कहीं कहीं आपको टाइम चाहिए होता है. यू नीड टू बी इन दैट मूड, इन दैट जोन टू एक्चुअली स्पीक. आई गिव यू एन एग्जांपल. आपने जो मेरा टाइम अभी जो हम लोगों ने ये सेशन का टाइम ब्लॉक किया वो 1 घंटे का किया है बिटवीन अस, ठीक है ना, व्हिच आई डोंट नो व्हाई 1 घंटा, क्योंकि अगर हमें वो काम की बात करनी है तो आज मैं मूड में, आई एम एस्केपिंग, आई एम नॉट गोइंग टू हैव दैट कन्वर्सेशन टुडे. राइट, आई एम इन अ जोन, आई मीन जोन. तो ये खुद अपने एक्सप्लोर के लिए बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ पे मुझे हर चीज में मुंह नहीं देना. वो जैसे सोशल मीडिया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 2 मिनट मिल जाता है, व्हाट्सएप, फॉरवर्ड जर्नलिज्म. यार ठंड लगाओ, एस्केप नहीं है तो नहीं है, जाओ, नहीं देखना मुझे मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं चाहिए. कभी कभार मैं मोबाइल बंद करके बैठ जाता हूँ, 2 दिन तक मैं नहीं खोलता, मेरी मर्जी. इट्स माय चॉइस. अक्सर लोग क्या कहते हैं, अच्छा मोबाइल में भी ये होता है, लोग कहते हैं यार वी वर ट्राइंग टू गेट टू मोबाइल क्यों नहीं उठाते. मैं कहा मोबाइल अपने लिए लिया या तुम्हारे लिए लिया? मैं अपने आसानी के लिए लिया था तो मैं पहुंच सकूं, आप नहीं पहुंचे, आपका मतलब मुझे जब पहुंचना होगा मैं पहुंचने की कोशिश कर लूंगा. देखो इस तरह की जब यही चीज है, राइटली सेड, यही चीजें लोग जो है ना घबराते हैं करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई अगर आप देखें इतना आसान अगर होता, essentialism wouldn't have been a concept and it wouldn't have been such a bestseller book if it was so simple. In my mind it may be simple, but for some people it will be very difficult. इस सेक्शन के अंदर मैं सब चीजों की बात नहीं करूंगा, मैं एक चीज की बात जरूर करूंगा. उसके अंदर जो मैंने that I picked up is sleep. I realized I was actually compromising sleep for all these years, and I read this book about 3-4 years back. तो मुझे एहसास हुआ कि all these years I was compromising on my sleep. So after reading this book, I made sure I gave good attention, क्योंकि होता ये ना कि हम वो backfire myth है
कि मैं चीजें भी वही पसंद करूंगा जो मेरे दिमाग में बात मैच करती है। तो किसी ने राइट, कहा कि 5 घंटे की नींद बहुत कंफर्मेशन, है, किसी ने कहा कि कंफर्मेशन बायस। बायोलॉजिकल बताने के बहुत है। अब तो हम्म। कोरोना ने भी कह दिया ना 8 घंटे सोया करो। क्योंकि तो कोरोना ने आपको छोड़ दिया ना कि आप बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि आप कब उठते हैं, यू फिगर आउट दैट कि ऑटोमेटिकली 8 आवर्स में जो है वो बॉडी डिसाइड कर रही है, या कुछ के लिए 7, कुछ के लिए 9 बी, आई थिंक आई हर्ड दैट, सो या। हाँ, लेकिन एट एट जरूरी है, तो वो एट जो है ना वो जरूर रखें, इट एक्चुअली हेल्प्स आउट। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इन अंडर एक्सप्लोर। तो चूज के अंदर, द एसेंस के अंदर आई फाउंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, उसका तरीका एक्सप्लोर। अब प्ले तो आपने देखा हुआ, वैसे तो हम चलते फिरते करते रहते हैं। वो एक तो जेंगा हम खेलते हैं, आई हैव कम अप विद, आई हैव अ न्यू गेम बाय द वे। नाउ दिस बाय द वे इज इन ऑल द बिजीनेस that we are in, हम्म। yet taking time out and playing games, discovering things, just play with life. It is just so Right. important to play. Yeah. 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 And And what interestingly, in the book, in the book, the writer talks about the need for play. Play is not something which is, कि हम अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो I'll play. Whereas play, and I don't want to go into the details of it. I think fun and play will completely take us to a different domain, especially being fun words. But and then the serious play that I usually engage in. But I think that's interesting that you should explore play, because that amount of time that you involve in play makes extra time for you later on, because your mental and cognitive ability becomes faster. बल्कि पता है, आई थिंक इट्स सो नाइस यू सेड, अभी भी लोग जो घर पे बैठे हुए रात को 2 बजे, नादिया मैं और कैसे कभी कभी उठ के गेम खेलते हैं। कल फॉर एग्जांपल परसों रात को, while we were all technically gone to bed, and I said, यार ये काम करते, we just sort of a game, let's play that. And नादिया said कि अच्छा, वो कैश को बोला, मैंने कहा काम, हम लोग दोनों बाहर जाके ना खेलना शुरू करेंगे, देखना वो वैसे ही आ जाएगा। So there was a game that we played. We started first move, and again क्योंकि आवाज थी तो वो आगे हो रही, क्या हो रहा है, ओहो, and then we played for about 2 till from 2 a.m. to 2:30 a.m. Right. and we are very happy. Yeah, It one of was the mistakes essential that for us. I've been doing is I've been playing games, some strategy games on my mobile, which needs to, and then I'm not spending family time on that. So, interestingly, Farhad, before you go on to the next point, Rahim Abbas is online with us. He says, "Hi guys, great going." Rahim is a good friend of both of us. He says, Oh "Believe this yes. new situation is a good opportunity to introspect and be withdrawn." That's also amazing. I think this new situation and essentialism goes hand in hand, because we suddenly realize what really was essential for us. इसी चीज पे मैं तीसरे ई पे आ जाता हूँ। सो गैट द टाइमिंग इज सो परफेक्ट। अक्सर मैं सेशन Yes. में भी कहता हूँ ना, व्हेन यू ब्रिंग अप अ पॉइंट दैट आई एम अबाउट टू गेट इनटू, शोज मी यू हैव Yeah. अंडरस्टूड मी सो फार। Yes. एलिमिनेट के अंदर जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है, ही सेज क्लैरिफाई, देन ही स्पीक्स ऑफ क्लैरिफाई था, फिर चैलेंज, एंड आई लव द नेक्स्ट वर्ड, ही सेज अनकमिट। Uncommit and limit also he talks about. Yeah. यही है ना, इसी तरह की। हाँ, हाँ, और अब uncommit and limit. हाँ. अब ये क्लैरिफाई चैलेंज, अब इसके अंदर भी मैंने एक और मॉडल उठाया व्हिच इज टू डू विद कोचिंग, एंड आई रियलाइज कि एलिमिनेट करने के लिए यू डोंट जस्ट एलिमिनेट लाइक दैट, you don't Hmm. just don't throw things out like that. So then what we eliminate करने के लिए सबसे पहले, जैसे अभी जैसे रहीम ने भी कहा, इंट्रोस्पेक्ट। सो आई थिंक वी नीड टू हैव कॉन्वर्सेशंस। एलिमिनेट करने से पहले थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर लो अपने साथ, दूसरों के साथ, एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन, क्लैरिफाई एंड चैलेंज के वाकई मुझे ये करना है, नहीं करना है, जरूरी है, नहीं है। Hmm. तो Hmm. एसेंस को मैंने ढूंढ लिया कि वाकई व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ। Hmm. एलिमिनेट करें कि इसमें से कौन कौन सी चीजें मुझे जरा निकालनी है, क्योंकि मैं एस्केप जब करता हूँ तो मैं सोचा, मैं नींद अपनी पूरी करता हूँ तो मैं फ्रेश हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, Hmm. मैं खेल रहा हूँ तो मुझे मेरे अंदर वो लाइवलीनेस भी है। आई एम Hmm. नाउ इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड टू नाउ स्टार्ट एलिमिनेटिंग। और एलिमिनेटिंग के लिए ये किताब के अंदर नहीं है, दैट व्हाट मेथोडोलॉजी आई फॉलो इज यू क्रिएट अवेयरनेस, Mhm. तो यू इंट्रोस्पेक्ट, वाकई जो मैं कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, क्या नहीं है, थ्रू कॉन्वर्सेशन आसपास उस चीज का क्या असर हो रहा है। यू गेट क्लैरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अवेयरनेस। तो जैसे इंट्रोस्पेक्ट की जो बात अगेन वो उसने की, एंड Hmm. देन यू मेक योर चॉइसेस कि मुझे Hmm. करना क्या है। एंड दैट इज आई थिंक वेयर आई लव द वर्ड अनकमिट, कि ये मैं Hmm. कर तो रहा था लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी, इसके पीछे Hmm. मतलब कि मैं कर क्यों रहा हूँ। Hmm. मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा कोई कन्वर्ट कर रहा है इनटू एनी गोल दैट आई रियली वांट टू अचीव इन माय लाइफ, Hmm. or is it just something that I am doing? I think कोरोना से पहले इनएफिशिएंसीज कितनी ज्यादा थी बिजनेसेस के अंदर। नाउ प्लीज अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप फारिग बैठ के अगर आप टीवी देख रहे हैं या कैरियोकी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गो इनटू दैट इंट्रोस्पेक्शन। आई थिंक ये किताब बहुत पॉजिटिवली इंकरेज करता है कि किसी भी चीज को, और जहां जहां से अनकमिट करना है अपने आप को, जहां पे मुंह दे दिया है, निकलना शुरू हो जाओ।
Right. And I think कोरोना के अंदर भी नई किस्म की इनएफिशिएंसीज आई हैं। ये जो नॉन स्टॉप कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम कॉल्स जो चल रही हैं, साथ ही साथ जो है वो व्हाट्सएप एंड स्लैक्स, समटाइम्स वी जस्ट कमिट फॉर नो रीजन। एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन मुंह देना अकॉर्डिंग टू यू जरूरी होता है। वी कैन जस्ट अनकमिट एंड वी कैन कम बैक टू इवन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड द चैट्स लेटर ऑन विद अ स्पेसिफिक टाइम बॉक्स। सो या बिल्कुल. So that is what this E was all about for me. It was actually uncommitting myself. कि जब भी बंदे कहते ये भी करना है, ये भी करना है, तो बंदा सोच ले वैसे. Have that awareness conversation with yourself. I think the key word over here is have a conversation. So in both awareness and this one, I'd have a conversation either with somebody else or with myself. कि करना क्यों है? What are ये है क्या? कितना अहम है? किस तरीके से करना है? So you go into that questioning yourself. And when you question yourself, you realize कि कितनी बिला वजह के मुसीबतें अपने सर पे डाली हुई होती हैं. And again, ये करने के लिए exploring. Go ahead. So I think वही वाली लाइन आती है दिमाग में बार बार, जो उस किताब के अंदर है कि be the chief editing officer of your life. Edit it out. Editor का काम सिर्फ काटाकुटी करना है, nothing else. And he says you should edit out all the non-essentials from your life. So I think that's interesting. And जब ये सारी चीजें कर दी हैं, now we are ready to actually execute. अब इस किताब के अंदर और चीजें दिखी हुई हैं, चीजें और मजा ये ना कि एलिमिनेट कर दो. लोग कहता है मैं एसेंस ढूंढ लूं, मैं एक्सप्लोर कर लूं, मैं सो जाऊं, मैं खेल लूं, मैं मौसम के मजे ले लूं, एलिमिनेट कर दूं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव डायलॉग. तो काम कब करना है? काम अभी आता है. काम ये वो काम है जो कि वाकई में आपके लिए जरूरी है, which will actually take you forward. These are actually the essentials of things that are essential to you. Let's put it this way. Because we've started off with the essence. इसके अंदर execute करने के लिए वो कहता है, which is similar to some extent uncommit. देखो word use करता है subtract, कि कुछ चीजें निकालते जाओ. He speaks. अरे उस किताब की एक और चीज मैंने पिक की, how important it is to energize yourself, क्योंकि अब तो एनर्जी बच गई है ना, अब थके हुए नहीं हो. ये सारी चीजें कर ली ना, ऐसे कोई भी काम नहीं किया वैसे, खाली वो एक कोटेशन भी थी ना कि if you had पता नहीं कितने hours to cut a tree, तो एक बंदा कहता है I would spend so many hours sharpening my saw and then इतने हिट से मैं दरख्त गिरा दूंगा, बजाय इसके मैं 12 घंटे तक दरख्त काटता रहूं. So here you actually sharpened your saw throughout, and then you do it. And I think time management का execution के अंदर, and this is something that you and the others and someone would know, I've often spoken of this in my sessions as well, something that I learned from my coach. It's derived from what Dan Sullivan would say in time management, कि देखो 3 तरह के time हैं: focus, buffer, and free time. You now have time to do the free stuff. There's a lot of buffer time. थी. Buffer क्या है? जो आपके आगे वाले काम के आपके एसेंस का मेयार बेहतर करता है. Right. So there's no harm in maintaining your calendar. Do that. It is going to, even if it's not like, I would be surprised if maintaining a calendar is not top your top laundry list of priorities. Because it is such an important thing to do, जो कि करते रहना बहुत जरूरी है. So what we do is we make sure execution, we make the right plan, we manage our time, and then we have all the energy to go forward and do it. So that is actually what I've learned from the book. And I think ये किताब इसलिए जरूरी है कि जब आप ये पढ़ते हैं, आपको प्रायोरिटीज का पता चल जाता है, प्रायोरिटी की लिस्टिंग का समझ में आ जाता है, आपको ये समझ आता है ट्रेड ऑफ्स होंगे. That's the reality of life. No matter how much time management you study, you will and sometimes have issues in that. ये जितना आप कर लें तो ज्यादा अच्छा है. There's an interesting comment. Khalil says, nice to see Ustad and Bara Ustad debating. I think he is not seen as debating as yet. We can sometimes get very uncivilized also. Khalil भाई ये खामा-खा जो है ना, ये जो बड़ा उस्ताद है ना, ये खामा-खा का ये बोल रहा है, क्योंकि ये बड़े उस्ताद को तो पता है ना वो क्या चीज है. वो मुझे खामा-खा ये लोग तंग करते हैं. मैं तो सिंपल हूँ. जो बंदा बोलता है सोऊंगा, आराम करूंगा, भाग जाऊंगा, एस्केप करूंगा, वो कहाँ से मसला कर सकता है? Right. So Farhad, execution के अंदर I think there's one thing which I picked up from this book a lot. वो था कि जी you have to say no. You have to say no. First you have to say no to yourself, then you have to say no to others. And अमूमन जो है वो no बोलना, ना बोलना. There is research also that as humans we are creatures of reciprocity. So अगर हमें कोई कहता है तो हम फील करते हैं कि we should say yes to that. Similarly, culturally लोग कहते हैं कि जी ना कैसे बोले, ना बोलना बहुत बुरी बात है. And then there's the interesting thing which he talks about, the writer. वो कहता है कि if you're not saying no to something, you're saying no to something else. What is that concept and how does that come into execution? अगर आप उसको ट्रेड ऑफ्स के अंदर देखो, जो मेरी जो इंसाइट है, जैसे बताते हैं हर ऑथर अपने जाविये से लिखता है, अपना पर्सपेक्टिव है. आई एम लुकिंग एट इट मोर फ्रॉम माय perspective and the utility that I have derived. मैं कह रहा हूँ ट्रेड ऑफ्स के अंदर नो सबसे ज्यादा जरूरी है. और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जब एक काम को
करते हो उसके जो सब्स्टिट्यूट जिसको आप छोड़ रहे हो, द ट्रेड ऑफ, यू एक्चुअली सेड नो टू दिस. So if I get under pressure कि आपने मुझसे कुछ कह दिया, मैं कहूँ अच्छा चलो यार मैं कर दूंगा, मुझे समझने की जरूरत है, उस वक्त मैंने किसी न किसी एक और चीज को ना कहा है. ये जानने की जरूरत है कि what is that one thing that I'm saying no to. Correct. If that is right at the top of my priority list and I've said no to that, I've actually lost out. क्योंकि आपके हर yes के अंदर किसी न किसी को no मिलेगा. And आपको बुरा by the way नहीं, बुरा कब नहीं लगेगा, if you've done your elimination process right, you won't even feel bad. क्योंकि आपको पता है ये मेरी चॉइस थी, मेरी प्रायोरिटीज में नहीं आती है, उसकी जरूरत. वो याद है जब हम फिलीपींस जा रहे थे तो वो एम्बेसी के अंदर क्या लिखा हुआ था? Your urgency is not necessarily my emergency. ऐसा ही कुछ था शायद. हाँ ऐसा ही कुछ था. Your urgency, हाँ ऐसा ही कुछ था. यार अगर खुद आपने नहीं किया तो मुझे मेरे पीछे मत पड़ो. And वो लिखा हुआ नहीं था, इतना बड़ा बोर्ड लगा के, it was in your face sort of a board. Again, I'm probably deviating, but just for our viewers, just for our viewers, we had an assignment to go to Philippines, and अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट की मेहरबानी से जब हम एम्बेसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी 15 दिन से पहले आपको वीजा नहीं मिल सकती. अब क्लाइंट ने कहा जी मैं तो 15 दिन वेट नहीं कर रहा. अब हम पहुंचे उस बंदे के पास और उसको कहा कि जी वी आर इन एन इमरजेंसी. एक बोर्ड उसने लगाया हुआ था, उसने उसकी तरफ इशारा किया, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था योर urgency is not necessarily my emergency, and that's it. And I think that was really interesting because essentially Philippines embassy had defined their protocols. You want visa, you come 15 days before to us, and that's about it. Don't waste our time by arguing about it. So interesting. There are some हमारे भी तो मसले थे ना, वो भी ये भी था कि मैं करूंगा फिर मैं कहीं और जाऊंगा, वापस आके पासपोर्ट डालूंगा. पाकिस्तान में तो मिलना चांस ही नहीं थे, दुबई में चांस था. That was interesting. Yeah, I think that's a separate story of how we were able to hack the process and innovate and still get it done in less than 15 days by using, I think, our interpersonal skills and relationships. There are some people who were asking about the book. Welcome to the Bibliophile Circle, which is a book lovers club. This is in episode 3, and if you notice, ये नीचे जो ticker चल रहा है उसमें किताब का नाम भी है. It's Essentialism by Greg McKeown. So amazing book. And यहाँ पे एक और दोस्त जो है आए हुए हैं, सैयद मुबशिर इमाम. I think he's the first time he's joined us. He's also shared a link. I don't know if you can see that. कहीं पे किताबें मिलती हैं आपको. Is it on the main, Farhad? I can't see it on the main. The book lovers can always log on to 551 पे मुबशिर भाई ने डाला हुआ है. Right. PDF. Okay. I think वहाँ पे थोड़ा सा challenge है, piracy, non-piracy, but yes, book lovers can pick up that link from the comment. So Farhad, we spoke about the 3 E's. First, essentialism talks about अपना essence define करे life में है क्या. Not everything is necessary. Being busy is not good, according to the book. Someone we can have a different argument on that. Then I think, sorry I'm cutting, I think it's a useful thing that you do. अगर for example अगर मैं कह रहा हूँ busy हूँ और मैं बीन बैग पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ, you see that is okay because that is something that I've chosen. दूसरों को मैं नहीं बोलूंगा मैं बैठ के बीन बैग. अब आपको मैं बोलूँ, आप कहोगे मुझे बात करनी, मैं कहूँ नहीं यार मैंने खाली कॉफी पीनी, मैंने बात ही नहीं. And you've seen by the way me doing that sometimes. ऐसे मुझे नहीं करना, मेरी मर्जी. कोई मुझे कहता है कि क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी कर रहा हूँ, मैं फारिग बैठा हूँ, बताओ मुझे नहीं करनी बात, तेरी मर्जी. So and then I think this is where the second E of the book comes in. Explore करने के बाद eliminate करें, finally execute. Farhad, how do we execute all of this according to essentialism? Yeah, I think I'll come back to the same first point. इसके अंदर the first E execution आपने तय कर लिया, आपने time manage कर लिया. I think the first E is critical for me, which is the essence. What am I doing? What value does it give? Is this a laundry list? Is it not a laundry list? What are the trade-offs that I'm making? Because in every, as Greg says himself, there is always an opportunity. किसी ना किसी को मैं ना जरूर कह रहा हूँ. So if I can live with the no of the other thing, then I'll go ahead and do it. हाँ, उसके तरीके हैं, ठीक है ना भाई, ये इतना रफ होने की जरूरत नहीं है जैसे कभी कभार मैं हो जाता हूँ. नहीं मेरी मर्जी. ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है बाय द वे, और अब ये एडिट नहीं होगी. आई मेक श्योर कि चीफ एडिटिंग ठीक है ना, कभी कभी आप जाहिर बात है हो जाता हूं. भाई मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं जाहिर बात है नहीं करनी ना भाई, मेरी मर्जी, बात ही नहीं करनी. Behind the scenes, Farhad Karamally for a lot of people who are online right now, by the way. You might have by the way, you made it very clear. He's very blunt. He's on your face as well. देखो मैं वैसे आराम से बात करता हूँ, चीजें कोई समझ जाओ ना मेरी भी. Because you know why? Because it is my essential. And that's where the example of the Philippines वाला comes in. Your urgency is not necessarily my emergency. ठीक है, और your emergency not my emergency, the other way around. लेकिन important चीज ये देखिए, इसको करने के तरीके हैं.
ये अगर आप करते हैं and you go straight into managing your time, I think that's the most ridiculous thing that anybody could do. इस किताब में ये जरूर था कि हम जो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, तो टेक्निक है, इट्स अ रिचुअल. उस रिचुअल को करने के लिए डू यू नो व्हाट योर चॉइसेस आर, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग नो टू, Correct. Yeah. एंड आर यू अवेयर और डेली बेसिस पे हमारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं, एंड देयर इज रियली नो हार्म इन मेकिंग दोस ट्रेड ऑफ्स. Yeah. True. True. और And I डोंट think किल it's योरसेल्फ. important first to realize that I am making a trade-off over here. यस. People don't necessarily realize that they're making a trade-off. And I think the same sentence, if you're not saying no to something, you're saying no to something else. Great. Thank you, Farhad, for थैंक यू. आई joining सी the आमरा third हियर एज वेल. episode. थैंक यू आमरा फॉर जॉइनिंग. ऐसी अब मेरे अब मेरी भी आदत अंदर से नहीं खत्म नहीं होगी ना इतनी जल्दी. Yeah, So I Amra will is thank there. you. Brilliant I was topic. Thank looking you at. Amra, for joining. Yeah, we all those who are live with us, do share in comments. How did you like today's episode? This is the third episode. This is a new concept that we've started. We've called it the Bibliophile Circle. In case agar kisi ko nahi pata कि the word bibliophile, it means a book lover. Literally, that's what it translates into. And I think we are all book lovers who are all here. If you love a book that has impacted your life, do write to us, and maybe you can be our next guest on the episode. Today, we were talking about the book called Essentialism, and Essentialism is all about figuring out the essentials, living a life of design and not a life of default. Our next episode is on a book which is all about habits by Charles Duhigg. So we'll another excellent book. Keep a watch. Make sure that you press that bell icon if you're on YouTube, or like our page on Funworks, because you will get an update as soon as we are going live, as well as a few days before, so you can mark your calendars for our episode 4, as well as many other programs that Funworks is bringing live to you. Thank you very much for joining, all of you. Have a great day, and remember, either you are living a life of essentialist, or you're being a non-essentialist and you're living a life of somebody else's priorities. Thank you very much for joining. Allah Hafiz. Bye bye. Take care. Bye bye.